Hello friends, welcome to day 4, day 5 right? This is the fifth day of our Orlando road trip. So आज मैं हूँ Everglades National Park में. So सुबह मैंने होटल से अराउंड 8 o'clock स्टार्ट किया था. तो अभी 9:45 हो रहा है. इसमें बहुत ट्रैफिक रश था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया पहुँचने में. ज़्यादा दूर तो है नहीं मेरे होटल से. Everglades 1 hour डिस्टेंस पे है. सो जैसे एवरग्लेड्स नेशनल पार्क. सो अभी हम कुछ देर में जा रहे हैं एयरबोट टूर लेने, जो कि हमें एवरग्लेड्स की जंगल में ले जाएगा पूरा एयरबोट टूर. और हमें डिफरेंट एली में भी हमें एलिगेटर देखने को मिले. और पीछे जो आप देख रहे हो एवरग्लेड्स का नेशनल पार्क एंट्रेंस. सो जो कि यहाँ पे एलिगेटर सोज और बहुत सारे सोज भी होती है. विल गो दे एंड सी. सो उधर आप देख सकते हैं एयरबोट लगा हुआ है. सो एयरपोर्ट आप जो देख रहे हैं ये बहुत स्पीड भागता है पानी में. स्टार्टिंग में बहुत स्लो होता है, लेकिन बहुत तेज़ी से ये वाटर में आगे भागता है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टूर. आई विल सजेस्ट इफ़ यू आर कमिंग गो फॉर द एवरग्लेड्स सफारी पार्क, एवरग्लेड्स टूर एंड बोट टूर. Okay, so this is for 2 people. That will be a $10 charge for the national park entrance fee. Okay. तो अभी हम लोग बोट पे आ चुके हैं. दिस इज़ द एयरबोट टूर दैट वी आर गोइंग टू टेक. सो ये जो आप देख रहे हैं एवरग्लेड्स की जंगल है, ये पूरा एवरग्लेड्स की जंगल में जाएगा और पूरा दूर तक जाएगा. तो यहाँ पे ये ईयर प्लस दिया गया है, बिकॉज ये जो बोट है एयरबोट टूर बहुत आवाज़ करता है. सो यू हैव टू पुट दिस इन योर ईयर. एलिगेटर है, वहाँ पे एक एलिगेटर है जो दिखा. दो देखो कितनी बड़ी है. सो मैं एवरग्लेड्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. सो एवरग्लेड्स जो है ये 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क है यूएसए का, आफ्टर डेथ वैली एंड येलोस्टोन नेशनल पार्क. एंड एवरी ईयर यहाँ पे मिलियंस पीपल आते हैं एवरग्लेड्स विजिट करने के लिए, जो कि एज एन एवरेज है. बोट अभी फुल स्पीड में है एंड इट्स प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ साउंड एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग टू गो ऑन द हाई स्पीड ऑन द एवरग्लेड्स वाटर. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एवरग्लेड्स की जो टिकट है, जो यहाँ के जो एयरबोट टूर और जो सोज है या होती है, उसके टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं सस्ते में. फॉर दिस स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियो.
Don't worry, I'm a gentleman. We go ladies first. All right, it would be safer to walk right here than anywhere in the city. Watch the news tonight at 6 o'clock, and you will agree with me. You're more than welcome to stand up, look around, take some pictures, enjoy the views. I'm going to tell you folks a little bit about the Everglades, and we are going to try to find out some alligators. Everglades National Park is right around 2,400 square miles. 80% water, 20% land. All those trees that you see out there, most of those are islands. Normally, the average depth of the water is right around 20 inches, and it will reach 5 or 6 feet here and there. This is a river, not a swamp, one of the slowest moving rivers in the world. They call this the River of Grass. Besides alligators and crocodiles, we have 15 different types of mammals, 14 different types of turtles, 50 different types of fish, a little over 350 different types of birds. 200 of those will visit us. And of course, everybody's favorite, 28 different types of snakes. Of all those animals, 26 are on the endangered species list, 38 are federally protected. All right, you folks have any questions? Pretty quiet. All right, there are no brakes, there's no reverse. Keep your cameras ready. Try to find us some alligators. There's your alligator right there. More than welcome to go get a selfie. How big did they get? Female's about 8 or 10 feet, male's about 15. Oh my gosh. Big white bird is the great egret. Ready. सो एवरग्लेड्स में बहुत सारी कंपनी है, टूर कंपनी जो एवरग्लेड्स के जंगल में एयरबोट टूर प्रोवाइड करती है। पर जिस कंपनी से मैंने बुक किया है वो है एवरग्लेड्स सफारी पार्क, और मैंने ये जो टिकट लिया है वो मैंने ग्रुपॉन से लिया है, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा है $31.20 फॉर 2 पर्सन। एंड आप 1 एडल्ट का भी जो वहाँ कॉस्ट है $16 है। और जब आप यहाँ आइएगा तो यहाँ पे आपको $5 पर पर्सन एक्स्ट्रा देना होता है, जो कि ये बिकॉज ये नेशनल पार्क है, सो एंट्री फी होता है $5 इसका। वी आर गोइंग इन एवरग्लेड नेशनल पार्क, सो एलिगेटर शो। अच्छा, अभी हम लोग एवरग्लेड नेशनल पार्क जा रहे हैं, इसका एलिगेटर शो देखने के लिए। okay. So like presentation, right? And I think they will give you benefit with alligator also to put on your head. They're very happy creatures. They seem to be smiling all the time. Look at this guy. See? Big beautiful smile on there. In that beautiful smile that they all have, they have 80 teeth, 40 on top and 40 on the bottom.
They are able to go up to about 3,000 feet in a lifetime. They knock them out, grows right back. Also, they have a lot of power in their jaws. Okay, let me see if I can give you a little demonstration of that power. Come on, you can do better than that. That wasn't too good. I'm gonna move on to the big guy. Get Rocky out of the way. Rocky's always really Rocky. Come on. Come on, buddy. Greedy. That's his name, Greedy. We got Greedy, Rocky, and Buster over there. Alright, let's see if Greedy's got what it takes. Oh, yes he does. He's ready to go. He had his breakfast. So, that sound that you heard right there is the 2,000 pounds of closing pressure. Okay, and with that kind of power, they're able to break through the shell of a turtle. Their main diet out here is fish, birds, and turtles. Luckily, we are not part of the menu. Alligators are born with a natural fear of us. They want nothing to do with us. But with that said, there have been accidents in the past between alligators and people. But if you research those accidents, you're going to find out that the alligator has always been provoked. What I mean by provoked is that at one point or another, somebody fed a wild alligator. Once you feed a wild alligator, that wild alligator is not afraid of anybody. That's how those accidents happen. Now, a big question I get out here is, what's the difference between the alligator and the crocodile? These are all alligators here. Alligators have a round mouth. Crocodiles have a pointy, V-shaped mouth. Alligators have a tongue. Crocodiles do not have a tongue. The American alligator and the American crocodile, they tend to be the same size. But in other parts of the world, the crocodiles are definitely bigger, much more aggressive. Now the nose, the nostrils, okay, they're right over here. They're able to smell a wounded animal from roughly a mile away. When an alligator gets into a fight, they are able to bring their eyes inside of their head. That way they don't lose their eyes in the fight. Here's what that looks like. Oh my goodness. It's disgusting, I know. But as you can see, it doesn't hurt him, it doesn't bother him in any way. Again, totally normal for those eyes to go inside of their head during a fight so that they don't lose their eyes in the fight. These guys also have an extra eyelid that opens and closes sideways. It's called the nictitating membrane. That extra eyelid, when they go underwater, it closes and keeps the water against their eyes, but they can still see their prey in the water. So it's out fantastic. And last but not least, the most important part of the alligator's body are all these bumps right here. They're called osteoderms. The reason that the osteoderms are so important is that's the part of their body that acts as a solar panel. A lot of times you see these animals just laying around in the sun, and what they're doing is generating body heat. They need to reach a body heat of 65 degrees or higher in order to digest their food. So if they eat something they do not reach 65 degrees or higher, which their belly will rot, and it can make them very sick. That's why that part of their body is so important for them. Well, with that said, are you ready to take a picture with an alligator? Yes. Don't worry, it's not going to be one of these. It's going to be a little guy. His name is Snappy. Never mind the name. I'm going to go get him now, and I'm going to stand right outside. So if you guys want to take a picture with him, all you have to do is come see me. Just so everybody knows, the park does ask for $3 a person to take a picture with Snappy. I'm going to go get him now. Let me have everybody please stand up. Please make a line where it says exit. I'm going to meet you there now with Snappy in here. और अभी जो नेक्स्ट है वो मेरा नंबर है एलिगेटर होल्ड करने के लिए और आई एम वेरी एक्साइटेड टू होल्ड दिस Ready? How many? Two. One by one. He's going to wiggle. Don't be afraid. I know. You're not afraid? नो See, there's no music. Very happy animal. So
तो ये एवरग्लेड्स का रेस्टोरेंट है, अगर आपको कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अ गिफ्ट शॉप। एवरग्लेड्स का ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छा रहा। हमने एयरबोट क्रूज किया, बहुत सा एलिगेटर देखा, यहाँ पे एलिगेटर शो देखा। हमने एक एलिगेटर ही पकड़ा, रियल एलिगेटर, हाथ में भी एलिगेटर पकड़ा। और एट टाइम जैसा कि मैं हमेशा जब जो भी अट्रैक्शन जाता हूँ वहाँ से गिफ्ट जरूर लेता हूँ। सो मैंने ये बेबी क्यूट सा मैग्नेट लिया है, एवरग्लेड्स मैग्नेट नेशनल पार्क, एज ए मेमोरी ऑफ एवरग्लेड्स नेशनल पार्क। सो दिस कॉस्ट मी $5.99, अराउंड $6, 6 point something with tax. I think na this is also going on my refrigerator. Yes. Okay, so next we have to start for our next destination that we are, हम लोग जा रहे हैं कार में, देखते हैं कहाँ नेक्स्ट जाना है। then I will update you on the next place. और अगर आप एवरग्लेड्स एरिया में आ रहे हैं और अगर आपके पास अब मान लीजिए आपने एयरपोर्ट से सिम लिया, मान लीजिए आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास अच्छी सिम एयरपोर्ट से लिया या फिर कोई भी सिम, जैसे मेरा नेटवर्क प्रोवाइडर है लाइका मोबाइल है, बट ये टी मोबाइल से कनेक्टिविटी लेता है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क की इशू बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप अपने या तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आपके पास इस तरह गार्मिन डिवाइस हो जो कि ऑफलाइन डिवाइस है यूज़ करता हो, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलेगा, या कोई GPS काम नहीं करेगा, कोई मैप काम कोई मैप काम नहीं करेगा। In 1/2 mile, keep right to US 41 East. विद दिस एवरग्लेड्स का सफ़र यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मायामी, जहाँ Be in the right lane. पे आज मैं जा रहा हूँ लिटिल हवाना। एंड दिस इज द लिटिल हवाना साइन, यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगा। In a 1/4 mile, use the right lane to take the Northwest 17th Avenue exit toward Ballpark. Be in the right lane. Then take the exit to Northwest 17th Avenue. सो मैं मियामी अभी अराउंड पहुंच चुका हूं। सामने जो आप देख रहे हो मियामी की स्काईलाइंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट लाइक बटन एंड शेयर ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। अभी मैं लिटिल हवाना से जस्ट 5 मिनट के डिस्टेंस पे हूँ एंड सामने जो ट्रक है वो डस्टबिन एम्प्टी करने वाला ट्रक है। इस ट्रक पे रोबोटिक आर्म से जो पूरे डस्टबिन को होल्ड करके उसे एम्प्टी करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।